52 किलोग्राम में ये खूबसूरत मुकाबला पाकिस्तान रेलवेज और पाकिस्तान नेवी के बॉक्सर्स के दरमियान खेला जा रहा है। रेफरी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं मिस्टर शेर मोहम्मद, हमारे इंटरनेशनल साबिक बॉक्सर हैं। आप देख रहे हैं जियो सुपर पर DHA लाहौर 38th मेंस एंड 2nd विमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और अब शुरू होने वाला है मेंस फ्लाईवेट बाउट का, जो कि 51 kg डिवीजन है। पहला क्वार्टर फाइनल। रेफरी ने दोनों बॉक्सर्स को रिंग के सेंटर में बुलाया, उनको रूल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं और अब उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ग्लव्स टच करें। अब बाकी रूल्स भी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं रेफरी की जानिब से दोनों प्लेयर्स को, और इनको अपने कॉर्नर्स में रिट्रीट करने का कह दिया गया है। जज नंबर 2 मिस्टर ताहिर कुरैशी, जज नंबर 4 मिस्टर फिदा हुसैन। Ladies and gentlemen, in the red corner we have Somama Rahman representing Pakistan Railway, and in the blue corner we have Mohammad Daud Khan representing Pakistan Navy. Round 1. Round 1 is underway here between these two incredible fighters. The quarterfinals of the men's flyweight division. This is the first quarterfinal for men's flyweight. We have Somama Rahman in red representing Team Railway, and in blue we have Mohammad Daud Khan representing Pakistan Navy. And both of these boxers taking a more mature approach wherein they were trying to gauge. मोहम्मद दाऊद खान लैंड्स अ पंच। मोहम्मद दाऊद खान ने एक बेहतरीन मुक्का लगाया, लेकिन चूंकि सुमामा रहमान डॉज कर रहे थे, वो पंच लैंड हुआ सुमामा की बैक पर, और मोहम्मद दाऊद खान को रेफरी ने वार्न किया। रेफरी बेहतरीन तरीके से इस फाइट को कंडक्ट करते हुए, और उन्होंने अपनी अथॉरिटी स्टैंप की हर तरीके से और बताया कि मेरे रूल्स के मुताबिक यहाँ फाइट होगी, और अगर इस तरह ना हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। और दोनों बॉक्सर्स रेफरी का ध्यान से उनकी बात सुनते हुए, उनको फॉलो करते हुए एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट दे रहे हैं हमें। Somama Rahman in red and Mohammad Daud Khan in blue, who now launches a flurry of attacks towards his opponent, and he had him against the ropes, which is why they were brought to the center once again. और इसी तरह मोहम्मद दाऊद खान अपनी पॉइंट्स को बढ़ाते हुए कुछ अच्छे पंचेस के साथ वो अपने लेफ्ट हैंड का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और गालिबन ये इस वजह से है कि लेफ्ट हैंड ज़रा ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। बॉक्सर अपने जो प्रायोरिटी है वो देता है अपने ज़्यादा यूज्ड बाजू की तरफ, लेकिन कभी कभार वो ये भी करते हैं कि वो अपने अपोनेंट को डराने के लिए या उनको सरप्राइज करने के लिए वो अपना वीकर बाजू भी इस्तेमाल कर लेते हैं। And now we see Daud Khan on the defense, whereas Somama Rahman trying to gauge how to land a punch against Mohammad Daud Khan. Perhaps he was anticipating Mohammad Daud Khan would come in, and he does, but Mohammad Daud Khan has timed that brilliantly, and Somama Rahman now facing the attack. He could not get that right jab in the way he was planning to, and now a few quick jabs thrown once again by Somama Rahman, who's in red representing Railway, at Mohammad Daud Khan, who is representing Pakistan Navy in blue. This is the first round of the men's quarterfinals flyweight division. ये बेहतरीन फाइट हम देख रहे हैं जिसमें दोनों बॉक्सर्स बड़े मैच्योरली देखना चाह रहे हैं कि क्या नतीजा निकल सकता है, और रेफरी ने दोबारा से उनको बताया कि आइडल खड़े होना एक ऑप्शन नहीं है. राउंड 1 comes to a close. Both boxers will have to come up with a better strategy because they need to be scoring points in order to win.
Round 2 begins between these two fighters. Red representing Sumama Rahman, who is from Team Pakistan Railway, and in blue we have Mohammad Daud Khan representing Pakistan Navy. In the previous round, we saw that Daud Khan scored a few good points and Sumama Rahman was faltering in his defense a bit. We've seen that there has been a height advantage to one of the boxers in each of the 3 matches that we've seen here. The first men's flyweight quarterfinal, we see that again, that Sumama Rahman has a significant height and reach advantage, लेकिन मोहम्मद दाऊद खान बिल्कुल ये नहीं देखेंगे कि उनके अपोनेंट की हाइट क्या है और रीच क्या है. वो गए और उन्होंने अटैक किया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट स्कोर किया क्योंकि उनके बड़े क्विक शॉट्स थे मिड सेक्शन की तरफ, पेट पर और सीने पर लगने वाले ये मुक्के थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ मुक्के सर की तरफ भी लगाए जिसके लिए उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. और अब दोनों बॉक्सर्स एक बार फिर से देखते हुए कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. मोहम्मद दाऊद खान, brilliant attack once again. Sumama Rahman thinking of how to gain on this deficit that is being created against him. Amazing right jab from Mohammad Daud Khan. Mohammad Daud Khan in blue representing Pakistan Navy. And there seems to be a bit of bleeding perhaps on Mohammad Daud Khan's face, which the referee has taken care of, and now signaled the fight to continue. Sumama Rahman feeling confident that he's hurt his opponent and may be able to get back into the fight now because Mohammad Daud Khan is on top right now. Amazing punches thrown left and right by Mohammad Daud Khan. Sumama Rahman against the ropes now, jumps back onto Mohammad Daud. Both fighters are locked up. Both fighters not trying to land a punch, rather hold each other off, and the referee is very keen about that. The referee breaks this up effectively, and it's just excellent officiating. This is proper international boxing, ladies and gentlemen, that you're watching only on Geo Super at the DHA Lahore 38th Men's and 2nd Women National Boxing Championship. The crowd really going wild here in support of Mohammad Daud Khan, who had cornered Sumama Rahman, and Sumama Rahman held on to Daud's elbow, which caused the referee to break this up. But Daud in blue is putting on a great show here. Sumama in red, on the other hand, representing Pakistan Railway, needs to put on a better show and a better fight, and the round 2 comes to an end here. Where the coaches will tend to Mohammad Daud Khan's wound. Second out, round 3. Round 3 underway here. Both boxers are called to the middle and told to box. Sumama trying to prepare himself. Sumama in red here, whereas Daud in blue. And Daud has been the superior attacker in this contest. Sumama Rahman अपनी पूरी कोशिश करते हुए कि वो इस जो उन्होंने पॉइंट्स अपने अगेंस्ट दिए हैं वो दोबारा से रीगेन करें. और थर्ड राउंड बिल्कुल इस चीज़ का सबूत है. हमने पिछली फाइट में देखा कि ईदुल्लाह ने लास्ट राउंड में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से वो फाइट जीत ली. क्या Sumama Rahman इस तरह का अपसेट कर सकेंगे? Daud in blue and Sumama in red. Sumama representing Railway, Daud representing Pak Navy, and Daud in blue has been amazing. Brilliant punches, closing in the gaps, going in, and that has been the key to success so far during the day. That if you can close the gaps and you're accurate with your punches, you're going to win. Sumama Rahman has a good reach advantage. ये अपने लंबे बाजुओं का इस्तेमाल करके
दूर से भी मुक्का लगा सकते हैं और उन्होंने ये कोशिश की है, लेकिन जैसे ही वो ये करते हैं, दाऊद खान जल्दी से अंदर आकर उनको सेंटर में, उनकी बॉडी के, उनके सीने पर, उनके पेट पर, उनके चिन के नीचे मुक्के रसीदते हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सुमामा रहमान के लिए। उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, उनको अपना डिफेंस बेहतर करना पड़ेगा, अपनी बॉडी का फेस खोले बगैर उनको पंचेस लैंड करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक दाऊद खान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और दूसरी बार इस कॉन्टेस्ट में सुमामा को वार्निंग मिली रेफरी की तरफ से कि उनका बाजू या उनकी कोनी होल्ड करने की इजाजत नहीं है। दाऊद खान, एक्सीलेंट once again. Sumama Rahman has no answers for what Daud Khan is doing here. Daud Khan comes in very quickly, uses good footwork, does not get caught into the traps, attacks his opponent effectively and then retreats. Good block there by Daud. Sumama's right jab was easily parried by Daud Khan. And Daud Khan, you see on your screen here, is confident for victory. He is focused as ever, and he knows that he can take this match in just a few seconds. He's coming towards Sumama Rahman to get his final few points. And the outcome is going to be very interesting because Sumama Rahman, even because of his reach, has not been able to land his punches in the right areas. And that we have seen yesterday is very important. Both camps cheering for their fighters, and this is the end of round 3. We await the judges' decisions. Both boxers quite confident of their performance, and let's see who the winner is. And the winner, who was quite apparent from the start of this fight, is Daud Khan, representing Team Navy in blue. Stand up for the champions, stand up. Thank you, Mr. Sher Mohammad Baloch. Bout number 42. Referee Mr. Gul Hassan. Judge 1, Mr. Ijaz Akbar. Judge 2, Mr. Raheel Adnan. Judge 3, Mr. Shohair Mohammed. Judge 4, Madam Uzma Kamer. Judge 5, Mr. Asif Kakar. Ladies and gentlemen, you are watching on Geo Super DHA Lahore's 38th Men's and 2nd Women National Boxing Championship. We are underway, the quarterfinals for the men's flyweight division, and we will be seeing the second competition for today for the men's flyweight bouts quarterfinals. Red corner Tana from Punjab, blue corner Muhammad Maaz Azad Jammu Kashmir. Round 1. Round 1 underway here on your screens. In red is Talha representing Team Punjab, and on the right
Then blue is Mohammad Maz representing Azad Jammu and Kashmir. The fight has begun to an explosive start. Wow! Both boxers swinging punches left and right and now trying to dodge because that wouldn't have been easy to take at the beginning. तलहा जो कि रेड में टीम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जान दिखाई इस कॉन्टेस्ट में. उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने अपोनेंट को डराने की कोशिश की और शायद काफ़ी हद तक डरा भी दिया है, क्योंकि अब मोहम्मद माज बहुत सोच समझ के खेल रहे हैं और तलहा की तरफ से फेरोसिटी कम नहीं हो रही. उनका जज्बा मजीद बढ़ता जा रहा है और वो मजीद मुक्के अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं. अ वेरी गुड लेफ्ट पंच फ्रॉम तलहा टू मोहम्मद माज. दिस इज पंजाब्स camp that you've just seen in support, and Talha lands an amazing punch. Mohammad Maz misstepped there, took the punch to his face and also slipped. So that has got to hurt both his ego and his face. And another amazing left punch from Talha. This is, we're seeing scenes here which are unrivaled in international boxing. Some brilliant flyweight boxing between these two youngsters, and they're showing a lot of maturity for their age. The way Mohammad Maz is trying to read this fight so that he doesn't lose a lot of points. But so far, Talha has been amazing with his punches. दोनों boxers ने ये punches dodge किए और Talha with a very good body shot इस वक्त. और अब ये मुकाबला फर्स्ट राउंड में मेंस सेकंड क्वार्टर फाइनल इन फ्लाईवेट डिवीजन अब थोड़ा सा कम इंटेंसिटी की तरफ आता हुआ शायद ये हो सकता है कि दोनों बॉक्सर्स ने जिस तरह से शुरू में अपनी एनर्जी दिखाई, क्या वो लूज कर चुके हैं और अब फटीग का रोल प्ले हो रहा है और क्या इनका इतना स्टैमिना है कि अगले दो राउंड भी चल सकेंगे. Azad Jammu and Kashmir's player Mohammad Maz trying to block that, but it was very effective from Talha, and despite a slight block, he still received the impact of that, and both boxers have embraced each other now. Talha holding on to Mohammad Maz while also giving some good body shots. Talha in red here representing Team Punjab, and Mohammad Maz representing Team Azad Jammu and Kashmir. A very good attack from Mohammad Maz now. Mohammad Maz ने अपने opponent को corner किया थोड़ा सा और एक दो right jabs land किया, and that is the end of the first round here. Round 2 begins with both coaches retreating quickly, and the referee is trying to determine whether the fight is ready to begin, and it is, and the referee has given the signal to both these fighters to continue their contest. In red we have Talha representing Team Punjab, and you can hear the cheers for Team Punjab, and in blue we have Mohammad Maz representing Team Azad Jammu and Kashmir. बेहतरीन शॉट्स तलहा की जानिब से टू द बॉडी, और मोहम्मद माज इस वक्त नज़र आते हुए कि और उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया कुछ और बॉडी शॉट्स के साथ अपने राइट जैब के साथ टू द साइड ऑफ तलहा, और तलहा ने बहुत दूर से मुक्का मारने की कोशिश की, अपनी फुटिंग भी लूज कर ली. ये एक काफ़ी बड़ी गलती थी इनकी जानिब से और माज इसका फ़ायदा नहीं उठा सके. माज इन ब्लू एंड तलहा इन रेड. तलहा की जानिब से ये एक मिस्टेक थी जिसको कैपिटलाइज किया जा सकता था, और तलहा ऑलमोस्ट रोप्स में गिर चुके थे और वहाँ से वो वापस आए. Hard punches from Mohammad Maz now. He is trying to build up some points here against his opponent, and he's doing a fairly good job of it. He closes in, gets another punch to the head.
Talha has been excellent, and wow, right jab, dead center in the face. That has got to hurt. Dodges that one. Talha being very effective in this fight, trying to conserve his energy, and an amazing left punch from Talha once again. Mohammad Maz getting the count from the referee, seeing whether he's able to continue or not, and Punjab getting cheers continuously. Punjab's fighter Talha. Perhaps the cheers have played a role in this contest, because Talha has been dominant from the start. This is your commentator and host, Muhammad Moinuddin, and you're watching on Geo Super, DHA Lahore's 38th Men's and 2nd Women National Boxing Championship, where the contest is underway. Brilliant attack from both boxers. And now they seem to be tired once again, as they were in the first round, because this fight is slowing down. दोनों बॉक्सर्स जांचते हुए कि क्या स्ट्रैटेजी अगली अपनानी चाहिए, और इसके साथ साथ थोड़ी सी अपनी सांस भी दोबारा से लेते हुए, ताकि वो अटैक कर भी सकें और उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकें जिस तरह से वो सोच रहे हैं. और ये तलहा का टॉन्ट अपने अपोनेंट की तरफ, और तलहा ने टॉन्ट करके एक बेहतरीन मुक्का भी सीधा, और इस तरह ही राउंड 2 का इख्तिताम हुआ. Round 3 and the action has begun once again. रेड में है हमारे पास तलहा जो कि टीम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ब्लू में है मोहम्मद माज जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तलहा ने बेहतरीन बॉक्सिंग के साथ अपनी बर्तरी को वाज़े किया है इस कॉन्टेस्ट में, लेकिन थर्ड राउंड हमने देखा है बहुत ज़रूरी रहा है, जहां पे हमने एक कॉन्टेस्ट ओवरटर्न भी होते देखा है. और अब क्या मोहम्मद माज वो क्रूशल पॉइंट्स बना सकेंगे, क्योंकि तलहा नॉट ओनली हैज़ ही बीन डोमिनेंट अपेरेंटली, बट ही हैज़ आल्सो बीन टेक्निकली डोमिनेंट, और उन्होंने वो पॉइंट स्कोर किए हैं जिसकी बुनियाद पे वो ये मैच जीत सकते हैं. Apart from that initial intimidation from Talha, ये एक बहुत evenly contested, एक बहुत बराबर मुकाबला रहा है, और इसकी वजह ये है कि either boxer has not been able to knock down their opponent, जबकि एक बार काउंट दी गई है मोहम्मद माज को, लेकिन वो गिरे नहीं थे, वो थोड़ा सा डेज हो चुके थे, और अब तलहा कोशिश करेंगे कि वो मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकेंगे, और यही कोशिश होगी मोहम्मद माज की भी, जो कि आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं. The boxers creating some space between themselves, landing a few punches, but they're very far away, so they couldn't actually make the impact. Talha now closing in once again. Brilliant strategy from Talha, you have to say. That is just sublime, the way he closes in, punches hard, and then just retreats. He is not worried about what Mohammad Maz is planning, because he's incredibly fast on the attacks, and he should be worried now because Mohammad Maz has him on the ropes. A lot of quick punches straight to the face, and Talha did not know what to do. He was back against the ropes. He was cornered there, and it was a very difficult situation for Talha, which is now gotten out of, he has now gotten out of, but it is yet to be seen whether Talha will actually be the victor, or whether Mohammad Maz is overturned with that beautiful series of attacks. Mohammad Maz's punch going outside of the range once again, not landing on his opponent. Flying out of the way, rather.
And the third round is underway between Talha representing Team Punjab in red and Mohammad Maz representing Azad Jammu and Kashmir in blue. This is the quarter-final for the men's flyweight division, the 51 kg category. A hard punch from Talha met with the cheers of the crowd, and this fight comes to an end. Both boxers congratulate each other, and now we move to the referees for the result. Bout number 43, referee Mr. Tahir Qureshi, Judge 1 Mr. Rustam Baloch, Judge 2 Mr. Ijaz Akbar, Judge 3 Mr. Rashid, Judge 4 Mr. Sher Ali. The referee has called both boxers in a fashionable manner to the center of the ring, and we are awaiting the judge's decision. And the announcer, the Honorable Parvez Paracha now. दोनों बॉक्सर्स ने आखिरी लम्हात तक एक दूसरे को जेर करने के लिए कोशिश की. Red is winner! And the winner in red is Talha representing Team Punjab. He graciously congratulates his opponent. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली, जो कि टीम वापटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अली, आपका आज क्वार्टर फाइनल्स में मैच है. क्या आपका ख्याल है, आपका टीम रेलवे के साथ जो बाउट है उसमें आप मुक्का लगाएंगे या मुक्का खाएंगे? हर बंदा इधर मुक्का लगाने आता है, खाने कोई नहीं आता. सब ने स्ट्रगल की हुई है, बाकी जिसकी ज़्यादा स्ट्रगल होगी इंशाल्लाह रिंग पे पता लग जाएगा. बिल्कुल ठीक. और आप स्ट्रगल की जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में जिस तरह से यहाँ आप और बाकी यंगस्टर्स मेहनत कर रहे हैं, आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तानी बॉक्सिंग का? जैसे ये DHA ने इवेंट करवाया, अगर इस तरह के इवेंट होते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि आगे SOP की वजह से काफ़ी गैप पड़ गया, कोई इवेंट्स नहीं हुए. हमें भी काफ़ी रेस्ट मिल गई. अभी ये इवेंट हुआ तो इससे काफ़ी सीखने को भी मिलेगा. दैट इज़ एक्सीलेंट. इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए. लेकिन यूजुअली यंगस्टर्स क्रिकेट की तरफ जाते हैं, जो कि एक बहुत मशहूर और बड़ा पसंदीदा खेल है सबका. तो आप किस तरह से बॉक्सिंग की तरफ आए? क्या आपके कोई आइडल थे? आइडियल हमारे फैमिली बैकग्राउंड में सारे बॉक्सर हैं. सब मेरे वालिद साहब खुद रेलवे के कोच हैं. बकाया उनके दोस्त जो हैं वो हमारे वापडा के कोच हैं वालिद साहब के, और मैं उनके ही शागिर्द हूँ तारिक सिद्दीकी साहब का. ठीक है. बाकी मेरे बड़े भाई जो हैं वो वर्ल्ड के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं. उनको देख के काफ़ी मेरे मतलब एक्सपायर होते हैं, उनसे शौक है मेरा काफ़ी उनको देख. माशाल्लाह, दैट इज़ ग्रेट टू हियर. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइट टुडे अली. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. Ladies and gentlemen, you are watching DHA Lahore's 38th Men's and 2nd Women National Boxing Championship here on Geo Super. I'm your host and commentator, Muhammad Moinuddin, and we are about to witness the men's bantamweight quarterfinal in the 54 kg division.
Here we see the Honorable Mr. Pervez Paracha about to make the announcement. The referee explaining the rules to both the boxers, and now they've been instructed to touch gloves and retreat to their corners. Round 1. In the red corner, we have representing Balochistan, Mohammad Qasim. And in blue, representing Team Azad Jammu and Kashmir, Mohsin Mahmood. It's been a great contest right here in the beginning few moments, and both boxers closing the gaps and trying to get in as many punches as possible. This is Mohammad Qasim, who has brought the attack on towards his opponent, and Mohsin Mahmood really struggling against him right now. He was against the ropes just now, and he still is. Mohammad Qasim का ताबड़तोड़ हमला अपने opponent के against, और Mohsin Mahmood के पास कोई जवाब नहीं जिस तरह से ये attack उनकी तरफ आ रहा है. Mohammad Qasim from Balochistan and Mohsin Mahmood representing Team Azad Jammu and Kashmir. That was very hard. He's been told to go towards his corner because he has dropped once, and now he's being told to get the count. He is ready to begin fighting once again. Brought to the center of the ring here, and the fight begins once again. Some hard shots from Mohsin Mahmood towards Mohsin Mahmood, from Qasim. Qasim in red here representing Team Balochistan, and his opponent Mohsin from Azad Jammu and Kashmir in blue. A hard left hook blocked very effectively by Mohsin. Qasim lands the second one. A good uppercut from Qasim as well. And Mohsin now holding on to his opponent because he's trying to buy some time. And he does that indeed. Regroups himself. And now he's ready to perhaps create another defense. Very good uppercuts. Technically very sound from Qasim. And Qasim is bringing the heat towards Mohsin right now. He has him against the ropes. Good body shot from the left. And now another shot to the head from the left. And wow, what a performance. There's been some bleeding from Mohsin's nose, and Mohsin's coach is now trying to see how he can stop the bleeding and allow Mohsin to continue, but it seems that the fight might be over. Wow. What a series of attacks from Mohammad Qasim representing Balochistan here, because the gloves are off now, as you can see, and that signals the end of the fight. The referee collecting the judges' decisions, and we're about to hear what happened straight from the official announcer, the Honorable Mr. Pervez Paracha. Judge 1, 45, ये नहीं होगी. दोनों बॉक्सर्स के लिए तालियां. Blue ABT, red is winner. And the winner for this contest in red, Mohammad Qasim from Team Balochistan. What an amazing performance. He has knocked out his opponent, the first knockout for today in the men's quarterfinal bantamweight division. Stay here for the action on Geo Super.
अवाम के जोश खरोश की आवाज के साथ आपको वेलकम बैक करते हैं टू द DHA Lahore's 38th Men's and 2nd Women National Boxing Championship. आपके सामने लड़ रहे हैं इन रेड नेमतुल्लाह फ्रॉम टीम पाकिस्तान एयर फोर्स और ब्लू में मोहम्मद इलियास हुसैन फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। यह है मेंस फेदरवेट डिवीजन का पहला क्वार्टर फाइनल इन द 57 kg कैटेगरी और इस वक्त नेमतुल्लाह को बताया जा रहा था कि he has to keep his head up. ये बहुत जरूरी है. I'm your host and commentator Mohammad Moinuddin and here we can see the first quarter final for the men's featherweight division. 57 kg bout. These two look very powerful, very tall as well and यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज कि नेमतुल्लाह जो कि ज्यादा लंबे हैं और जिनका बाजू भी ज़्यादा दूर तक पहुंच सकता है, वो इलियास हुसैन के लेवल पर आकर उनसे लड़ रहे हैं. ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है. इलियास हुसैन इन ब्लू ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग आर्मी और इलियास हुसैन बिल्कुल रेडी लग रहे हैं. ये दोनों फाइटर्स अपनी कल की फाइट्स जीत कर आगे तक आए थे और आज क्वार्टर फाइनल्स में हम इनका मुकाबला देख रहे हैं. वेरी गुड डॉज और टू बाय नेमतुल्लाह और अब नेमतुल्लाह को एक पंच रिसीव भी हो गया. इलियास हुसैन ने अपनी बतरी दिखाई और दोबारा से बहुत क्विक पंचेस के साथ इलियास हुसैन ने इंटिमिडेट करने की कोशिश की अपने अपोनेंट को और नेमतुल्लाह ने आज हम कई बार ये ट्रिक देख चुके हैं लेकिन जब भी देखे मज़ा आता है. वो अपने लेफ्ट हैंड को हिलाते हुए और कंफ्यूज करते हुए अपने अपोनेंट को कि क्या वो इससे मारेंगे या वो अपने राइट बाजू को इस्तेमाल करेंगे और इस बार इलियास हुसैन बच गए इस टेक्निक से लेकिन उन्होंने एक दो और पंचेस रिसीव किए नेमतुल्लाह की जानिब से. नेमतुल्लाह gets the ropes now, quickly dodges out of that, holds on to his opponent. Ilyas Hussain had him in a headlock, then receded. The referee checking whether Nematullah is good to continue. Ilyas on the other hand ready as ever. Ilyas showing a dominant display right now. Two quick lefts and one right and he had Nematullah in the ropes. Nematullah could not respond to that within the rules of the game and he fell down with Ilyas Hussain in his hands. Ilyas Hussain in blue representing Pakistan RB and representing Pakistan Air Force is Nematullah in red. Nematullah trying all his strategies, but this is the end of the first round. He gives Ilyas Hussain hands a forceful handshake or a touch of the gloves to Nematullah. Nematullah is clearly not pleased with his performance in the first round. One, ignition, let's get it started. Round 2. The announcer has begun round 2 and the referee is calling for the coaches to get out of the ring as soon as possible. Some ring cleaning going on and the referee is still not pleased. Pausing round 2 between Nematullah in red representing Pakistan Air Force and Ilyas Hussain in blue representing Pakistan Army. Nematullah gets the first punch, gets off to a very strong start and another punch landed by Nematullah. Nematullah was on the receiving end of punches in the previous round. लेकिन इस बार Nematullah बहुत strong नजर आ रहे हैं. वो अपनी ताकत का, अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता बतरी हासिल कर रहे हैं अपने अपोनेंट के ऊपर और इस तरह उनकी सपोर्ट बढ़ती जा रही है. एयर फोर्स के आप इस वक्त सपोर्टर्स देख सकते हैं कि वो किस तरह नेमतुल्लाह को चीयर ऑन कर रहे हैं. नेमतुल्लाह throwing off his opponent, going down once again. This was the loss of balance और अब चेक करते हुए रेफरी कि क्या वो कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं और फाइट दोबारा से शुरू हुई. नेमतुल्लाह ने एक और बड़ी जल्दी से पंच थ्रो किया. नेमतुल्लाह वो
फुर्ती दिखाते हुए जो पहले राउंड में वो नहीं दिखा सके। और ये एक बेहतरीन अटैक इलियास हुसैन की तरफ से, नेमतुल्लाह ने मिस किया और इलियास हुसैन ने एक परफेक्टली टाइम्ड पंच फेंका जिसकी वजह से नेमतुल्लाह आगे की तरफ गिर पड़े और ये उनको कंफ्यूज करेगा और उनका हौसला थोड़ा सा कम करेगा और इलियास हुसैन का हौसला बढ़ेगा जैसे कि फर्स्ट राउंड में था और अब वो अटैक करने की तरफ आ रहे हैं। Here in the second round in the men's quarterfinal in the featherweight division, 57 kg bout going on here. I'm your host Mohammad Moinuddin and you're watching on Geo Super, DHA Lahore's 38th men's and 2nd women national boxing championship. A lot of punches thrown right now and a brilliant display from Ilyas Hussain, who has conquered Nematullah, it seems. Nematullah is being asked if he can continue. His gloves are being checked, whether they're clean, whether they've not picked any debris from the ground. Great officiating from the referee here. This is a sight to behold. It is always enjoyable to keep them within the rules. Nematullah is down once again. Is he even able to continue at this point? Because Ilyas Hussain seems to be conquering him time after time. Whether this is a problem of the footwork or whether Ilyas Hussain is knocking down his opponent again and again into the ropes, as we just saw. नेमतुल्लाह दोबारा से वापस आते हुए आई थिंक नेमतुल्लाह बैक आउट कर जाते हैं चैलेंज से और ये उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, जिस तरह कि आपने अभी भी देखा कि नेमतुल्लाह पंचेस रिसीव करने के बाद पीछे हुए ताकि वो सोच सके। एंड हिज ग्लव्स आर डाउन, दैट इज नेवर अ गुड साइन। उनके ग्लव्स आप देख सकते हैं कि वो नीचे हैं एंड नॉट इन अ डिफेंसिव पोजीशन, जो कि खतरा स्पेल कर रहे हैं। ही नीड्स टू बी प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फर्स्ट. He cannot let Ilyas Hussain constantly attack him like that. The gloves are up again. That is more positive body language that we'd like to see from both the boxers. Second round comes to an end, and this has been torment for Nematullah in red. Ilyas Hussain, on the other hand, bliss for him. Round 3. The crowd is going insane here. Nematullah representing Pakistan Air Force and the entire Pakistan Air Force team telling him how to jump back into this match. The third round is underway now. Nematullah is down once again. Nematullah not backing down though. Nematullah is not bowing out of this competition anytime soon. Ilyas Hussain, on the other hand, continuing his onslaught. Ilyas Hussain बहुत confidence से खेलते हुए, और आप सुन सकते हैं आर्मी की चीयर्स इस वक्त मेरी आवाज़ को भी ड्राउन आउट कर रही है और ये आर्मी और पीएएफ का मुकाबला बहुत दिलचस्प बनता जा रहा है। और एक बार फिर पीएएफ के रिप्रेजेंटेटिव नेमतुल्लाह ग्राउंड पर और वेरी हार्ड शॉट्स फ्रॉम इलियास हुसैन रिप्रेजेंटिंग आर्मी। Ilyas Hussain trying to find the right opening, and he does once more. What is Nematullah doing? What is Nematullah doing? That is all we have to ask. He falls down, he gets back up. He falls down, he gets back up. He just can't seem to stay on his feet. I think the referee, yeah, there's the count. There is the count. Is he even able to continue? The referee now checking the gloves of Nematullah. Ilyas Hussain ready to take on his opponent once again. Ilyas Hussain mimicking the left, but coming from the right. Amazing move initiated by Ilyas in blue. And Nematullah in red representing Pakistan Air Force seems to be completely lost. Still staying on the ground, bowing down once again. Ilyas Hussain has to be turned off by this display because this is not good sportsman spirit being displayed by Nematullah. Bowing down, he has to keep his head up to win this fight, and definitely the judges will take note of that performance as well. Ilyas Hussain has fought like a true champion, whereas Nematullah just not keep up with the standard. Hard left shots to his face now.
Another very hard right shot. PF going crazy. And Nematullah has dropped his mouth guard, which is now being washed immediately by the referee. Pardon, Ilyas has dropped his mouth guard. Gloves are up again, and the third round continues between Ilyas Hussain in blue, representing Pakistan Army, and Nematullah in red, representing Pakistan Air Force. This is your host and commentator, Muhammad Moinuddin, and we're seeing quite the event here. Nematullah constantly falling down in this first, second, and third. Just like that, we have seen him go down time and time again. Perhaps it's an issue with his shoes. लेकिन कौन बता सकता है कि नेमतुल्लाह की ये बार-बार गिरने की वजह क्या होगी? इलियास हुसैन अपनी जीत को और मजबूत करते हुए, यकीनी बनाते हुए उसको, और रेफरी हर बार ध्यान से चेक करते हुए कि कुछ लग गया, और ये राउंड 3 का इख्तिताम हुआ इलियास हुसैन अपनी कोच को हक करते हुए। क्या इसका मतलब हो सकता है कि इलियास हुसैन ये मैच जीत चुके हैं? मिस्टर आसिम चट्टा, जज 1 मिस्टर अतर अजीज मुगल, जज 2 मिस्टर रजा, जज 3 बशीर अचकजई, जज 4 मैडम उज़मा, जज 5 राशिद मिनहास। The referee has called both boxers into the middle of the ring, awaiting the judge's decision. Both sides of the crowd going crazy in support. दोनों बॉक्सर बहुत खूब खेले, आखिरी दम तक खेले। लो फैसले में दोनों बॉक्सर्स के लिए तालियां। Blue is winner, and the winner of this contest, Ilyas Hussain, representing Pakistan Army in blue. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इमरान शाह, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम केपी को, और आज इनका एक मैच होगा। तो क्या आप बताएंगे सबसे पहले इमरान कि आपका मैच किस टीम के अगेंस्ट है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा मैच आज आर्मी के साथ है, वेल्टर वेट में सुलेमान बलोच के साथ, जो कि पाकिस्तान के टॉप बॉक्सर हैं इस टाइम। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश, पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह अपना मैच गेम दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपका टॉप बॉक्सर के साथ आज मुकाबला है, तो आपने ये तो स्टडी कर लिया, क्या आपने और कुछ भी जांचा है अपने अपोनेंट के बारे में? क्या क्या जांचते हैं मैच से पहले? फाइट्स वगैरह उनकी देखी हैं, थोड़ा आइडिया वगैरह किया है, ठीक है, तो मतलब उनकी स्किल्स वगैरह को जज किया है। तो इंशाल्लाह बाकी राउंड में भी देख लेंगे, फाइट जब स्टार्ट हो जाएगी तो तब भी देख लेते हैं क्या मूवमेंट्स हैं उनके, क्या पंचेस वो चलाते हैं, तो उस हिसाब से आगे गेम करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने अपने फिगर का और अपनी फिज़ीक का बहुत ख्याल रखा हुआ है। ऑब्वियसली यू आर अ प्रोफेशनल बॉक्सर माशाल्लाह। तो आप थोड़ा सा डाइट के बारे में बताएं कि क्या क्या मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं इस तरह की फिज़ीक रखने के लिए? ऑब्वियसली बॉक्सिंग में तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको मतलब अच्छी चीज़ें खानी पड़ती हैं, फजूल डाइट मतलब हम नहीं कर सकते, जंक फूड वगैरह बिल्कुल नहीं। काफ़ी अरसे से ख़ुद भी कोई मतलब जंक फूड ट्राई नहीं किया, दिल भी बहुत करता है लेकिन मतलब मजबूरी है। तो अच्छा है, प्रोटीन डाइट करते हैं, और मतलब ये है कि फ़जूल चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते जो जिनसे हमारे वेट को फ़र्क ना पड़े, और मतलब जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सैयद इमरान शाह मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर टुडेज इवेंट, एंड यू आर वॉचिंग जियो सुपर। डोंट गो एनीवेयर।